Assalamu alaikum, dear viewers. I am Muhammad Sultan, and you are watching my YouTube channel Sultan English Studio. Welcome back to my YouTube channel, dear viewers. Today I am discussing about themes, motifs, and symbols of Dr. Faustus. This is my fourth lecture about Dr. Faustus. Let's start. First of all, we discuss about theme. Theme is the fundamental and often universal idea explored in a literary works. थीम जो होता है ये बुनियादी और अक्सर आलमगीर नज़रिया होता है जो लिटरेरी अदबी कामों के अंदर इसको एक्सप्लोर किया जाता है. There are many themes in Dr. Faustus. I discuss below one by one. First of all है man's limitation and potential. The possible range of human accomplishment is at the heart of Dr. Faustus. The axis of this theme is conflict between Greek and Renaissance and Christian worldviews that has held sway throughout the medieval period. Dr. Faustus, scholar, lover of beauty, chafes at the bit of human limitation. He seeks to achieve godhood himself, and so he leaves behind Christian conception of human limitation. Dear viewers, ये जो थीम है इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है ग्रीक एंड रेनेसां और क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यूज़ के दरमियान. डॉक्टर फास्टस जो लवर ऑफ ब्यूटी है, स्कॉलर भी है, वो भी इसके अंदर ह्यूमन लिमिटेशन का मुजाहरा करता है और वो गॉडहुड को अचीव करने की कोशिश करता है और अपने क्रिश्चियन नज़रियात को पीछे छोड़कर. सेकंड है प्राइड एंड सिन. प्राइड इज़ द वन ऑफ द 7 deadly sins. Within Christian belief, pride is lethal motivation because it makes the sinner forget his fallen state. For Christians, men are fallen since birth. Faustus' first great sin is pride. He does not stop there. Faustus goes quickly from pride to all of the other sins, becoming increasingly petty and low. Dear viewers, इसके अंदर प्राइड जो है ये मेजर थीम में शामिल है और डॉक्टर फास्टस जो है वो प्राइड इसमें बहुत ज़्यादा शो करता है. क्रिश्चियन नज़रिए के मुताबिक ये हलाक कर देने वाली मोटिवेशन है प्राइड जो है, और इससे जो है सिनर जो है वो अपनी फॉलन स्टेट को भूल जाता है. क्रिश्चियन का दूसरा नज़रिया ये भी है कि मैन जो हैं आर फॉलन सिंस बर्थ, कि इंसान जो है ये पैदाइशी तौर पर ही फॉलन है. फास्टस का जो पहला ग्रेट सिन है वो भी प्राइड ही है, जिस पे वो डटा रहता है और आखिरकार दूसरे गुनाहों को भी करता है ये, जिससे उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है. फ्लैश एंड स्पिरिट, थर्ड थीम. द डिवीजन बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट वाज स्ट्रॉन्गर इन ग्रीक थॉट than in Hebrew thought, but Christians adopted the divide into their own belief system. In Christianity, flesh and spirit are divided to value the later and devalue the former. Faustus' problem is that he values his flesh and pleasure it can provide him,
while failing to look after the state of his soul. फ्लैश एंड स्पिरिट का जो थीम है इसके अंदर बहुत स्ट्रांग है, और इसमें ग्रीक थॉट जो है हेब्रू थॉट की निस्बत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्रिश्चियन जो हैं उन्होंने ये नज़रिया अपनाया है, अपना नज़रिया, कि फ्लैश एंड स्पिरिट आर डिवाइडेड टू वैल्यू द लेटर एंड डी वैल्यू द फार्मर। फास्टस का जो मसला है वो फ्लैश को वैल्यू देता है और प्लेजर उसको फ्राहम की जाती है, वाइल फेलिंग टू लुक आफ्टर द स्टेट ऑफ हिज सोल, ऐसा करते हुए अपनी जो रूह की हालत है उसकी हिफाजत करने में नाकाम हो जाता है। डैमनेशन is eternal. Eternal hell is another concept that Westerners take for granted as part of religion. While the Jewish view of the afterlife was somewhat vague, Christians developed the idea of judgment after death. Muslims developed a similar conception of hell and heaven, and to this day, eternal hell and eternal heaven remain an important feature of Christianity and Islam. If Faustus dies without repenting and accepting God, so he will be damned forever. As we learn from Mephistopheles, hell is not merely a place but separation from God's love. तो डेयर व्यूअर्स, इसके अंदर डैमनेशन जो है को अब्दी शो किया गया है, और इसके अंदर वेस्टर्न ज्यूइश के नज़रिए को बताया गया है। ज्यूइश जो हैं उनका मौत के बाद ज़िंदगी के बारे में मुबहम नज़रिया है, जबकि क्रिश्चियन जो हैं वो इस बिलीफ पे यकीन रखते हैं मौत के बाद ज़िंदगी के बारे में। मुस्लिम जो हैं उनका नज़रिया भी सेम है हेल और हेवन के बारे में, और इटर्नल हेल और इटर्नल हेवन के बारे में। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर इटर्नल हेल और इटर्नल हेवन जो हैं ये इम्पोर्टेंट फीचर है। फास्टस जो है अगर वो रिपेंट नहीं करता और वो मर जाता, and accepting God dies without repenting and accepting God, so he will be damned forever. As we learn from Mephistopheles, hell is not merely a place but separation from God's love. Mephistopheles ने भी ड्रामे के अंदर ये शो किया था कि हेल जो है वो एक जगह का नाम नहीं है बल्कि ये एक सेपरेशन है God's love. Valuing knowledge over wisdom. Faustus has thirst for knowledge, but he seems unable to acquire wisdom. Faustus' thirst for knowledge is impressive, but it is overshadowed by his complete inability to understand certain truths. Because of this weakness, Faustus can't use his knowledge to better himself or his world. He ends his life with a head full of facts and vital understanding gained too late to save him. This is the last theme. Faustus' थ्रस्ट फॉर नॉलेज उसको अनेबल कर देती है टू अक्कर विजडम। फास्टस की थ्रस्ट फॉर नॉलेज इम्प्रेसिव है, लेकिन ये ओवर शैडोड हो जाती है बाय हिज कंप्लीट इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड सर्टन ट्रूथ। इसी कमज़ोरी की वजह से फास्टस जो है वो अपना नॉलेज जो है अपने आप को ठीक करने में इस्तेमाल नहीं कर सकता और अपनी दुनिया को, और वो अपनी ज़िंदगी का अख्ताम कर लेता है और वाइटल अंडरस्टैंडिंग गेन टू लेट टू सेव हिम, जो अहम समझ है वो उसको बहुत देर बाद हासिल होती है। डेयर व्यूज़, ये थे थीम्स ऑफ डॉक्टर फास्टस। नो वी डिस्कस अबाउट द मोटिव्स।
First of all, we define motif. Motifs are recurring structures, contrast, or literary devices that can help to develop and inform the text major themes. मोटिव्स जो हैं ये बार बार आने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, कंट्रास्ट हैं और लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो मदद करते हैं डिवेल्प और इन्फॉर्म करने के बारे में टेक्स्ट मेजर थीम, यानी टेक्स्ट के जो मेजर थीम हैं उनको उनके बारे में इन्फॉर्म करने और उनको डिवेल्प करने में मदद करते हैं। तो इसके अंदर मैजिक एंड सुपर नेचुरल मैजिक और सुपर नेचुरल जो है ये फर्स्ट मोटिव है। इसके अंदर सुपर नेचुरल परवेड्स डॉक्टर फास्टस appearing everywhere in the story. Angels and devils flit about, magic spells are cast, dragons pull chariots, even fools like two Ostler, Robin and Rafe can learn enough magic to summon demons. So it is worth noting that nothing terribly significant is accomplished through magic. Faustus plays tricks on people, conjures up grapes, explores cosmos on a dragon. But he does not fundamentally reshape the world. The magic power that Mephistopheles grants him is more like a toy than an awesome, earth-shaking ability. To Faustus' vacillating mind and soul, he first sell his soul to Lucifer, then consider repenting. In this sense, the magic is almost incidental to the real story of Faustus' struggle with himself. Next, you have motive practical jokes. Once Faustus gains his awesome power, Faustus does not use them to do great deeds, but he delights in playing tricks on people, makes horns sprout from knight's head, sells the horse courser an enchanted horse. So such magical practical jokes seems to be Faustus' chief amusement. Marlowe uses them to illustrate Faustus' decline from a great prideful scholar into a bored mediocre magician with no higher ambition than to have laugh at the expense of a collection of simpletons. There was ये थे motives. Next we discuss about the symbols in Dr. Faustus. Symbols. First of all, we define symbols. Symbols are objects, characters, figures or colors used to represent abstract ideas or concepts. First of all, blood is the most major symbol, plays multiple symbolic roles in the play. When Faustus signs away his soul, he signs in blood, symbolizing the permanent and supernatural nature of this pact. Meanwhile, Christ's blood, which Faustus says he sees running across the sky during his terrible last night, symbolizes the sacrifice that Jesus, according to Christian belief, made on the cross. This sacrifice opened the way for mankind to repent its sins and be saved. Next symbol जो है Faustus' rejection of ancient authority. In scene 1, Faustus goes through a list of major fields of human knowledge, logic, medicine, law, theology, and cities for each an ancient authority: Aristotle, Galen, Justinian, and Joram's Bible. He rejects all of these figures in favor of magic. This rejection symbolizes Faustus' break with medieval world. Last and third symbol is the good angel and the evil angel. The angels appear at Faustus' shoulder early on in the play, good angel urging him to repent and serve God, evil angel urging him to follow his lust for power and serve Lucifer. The two symbolizes his divided will, part of which wants to do good
and part of which is sunk in sin. The dear viewers, this is my short video about themes, motifs and symbols. वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ कमेंट्स आल्सो। अल्लाह हाफिज़। Conjures up grapes and explore the cosmos, but he does not fundamentally reshape the world. Magic power that Mephistopheles grant him is more like a toy than some earth-shaking ability. Faustus' vacillating mind and soul, as he first sells his soul to Lucifer, then consider repenting. In this sense, magic is almost incidental to the real story of Faustus. नेक्स्ट जो इसके अंदर मोटिव है वो प्रैक्टिकल जोक्स की शक्ल में है कि फास्टस जो है गेन्स हिज ए सम पावर्स, not use them to do great deeds. He delights in playing tricks on the people, makes horns sprout from the knight's head, sells the horse courser and enchanted horse. Such magical practical jokes seems to Faustus' chief amusement. Marlowe uses them to illustrate Faustus' decline from a great prideful scholar into a bored mediocre magician with no higher ambition than to have laugh at the expense of collection of simpletons. तो डेयर व्यूज, ये थे मोटिव्स। अब हम सिंबल्स के बारे में देखते हैं डॉक्टर फास्टस के अंदर। सिंबल्स जो होती हैं आर ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, फिगर्स और कलर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1 जो है ब्लड है इसके अंदर सिंबल। ब्लड प्लेज मल्टीपल सिंबॉलिक रोल्स इन द प्ले। व्हेन फास्टस साइंस अवे हिज सोल, ही साइंस इन ब्लड, symbolizing the permanent and supernatural nature of this pact. Meanwhile, Christ's blood, while Faustus says he sees running across the sky during his terrible last night, symbolizes the sacrifice that Jesus, according to Christian belief, made on the cross. Sacrifice opened the way for humankind to repent its sins and be saved. Next है Faustus' rejection of the ancient authority symbol. In scene 1, Faustus goes through a list of major fields of human knowledge, logic, medicine, law, theology, cities for each and in ancient authority: Aristotle, Galen, Justinian, Jerome's Bible, respectively. He rejects all of these figures in favor of magic. This rejection symbolizes Faustus' break with the medieval world. थर्ड सिंबल इसके अंदर गुड एंजल एंड इवल एंजल की शक्ल में है. The angel appears at Faustus' shoulder early on in the play. Good angel urging him to repent and serve God. Evil angel urging him to follow his lust for power and serve Lucifer. The two symbolizes his divided will, part of which wants to do good, part of which is sunk in sin. तो dear viewers, ये थी short video about major themes, motifs and symbols in Dr. Faustus. वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब तक के लिए इतना ही काफ़ी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू फॉर वाचिंग. कमेंट आल्सो. अल्लाह हाफिज़.